You know very well in your class, annual exam as well as in half yearly exam, this question is asked letter to the editor, that means on the formal letter. So you all have to know about clearly so that you will be able to write the answer and no single mark will be deducted at the time of checking. Okay, first you know very well you have to write a letter to the editor. These letters give suggestions or opinion on issues of public interest. They form the most important part of interactive journalism. Readers react to the news items, articles to express their agreement or disagreement on an issue. Readers also write to the editor to draw the attention of the authorities towards problems that concern a large number of people. Now it's very clear whenever readers also write to the editor to draw the attention of authorities, not attention of editor. Editor is working here as a mediator. Now, editor draw the attention of the authorities toward problems when whoever authorities related to your issue or department issue. According to this, it is uh, going in the relevant authorities. Now, there are some important points you have to remember. Draw the attention of the concerned authorities, general public or towards the problem or issue. Note the editor. As I told you earlier, it's very clear for you whenever you write a letter to the editor, note the editor as he can only voice your views and ideas. Okay. Actually, have to draw the attention of concerned department, concerned authorities. Conclusion must be positive, straightforward with pleasant note and use of polite language. Whenever you write a letter, then you should keep in your mind you have to write it last when you conclude the letter, when you end the letter, then it should be in positive way and pleasant note and use the polite language. Don't ask the editor to solve the problem. I repeat again, don't ask the editor to solve the problem because editor will not solve your problem. Concerned department will solve the problem. Request and concerned authorities to take the action, not to the editor. It is not a direct request. Now you have to start editor, letter to the editor. Here is format. You all have to keep in your mind in easy way, sender address, then leave a line, then date, then receiver address, then subject, then salutation. Sender address, date, receiver, subject and salutation. Sender address according to question. According to question you have to write sender address, then date, then receiver address. In receiver address you have to write the designation of the person also. Okay, and I am talking about here to the editor. That means first you have to write the editor. Don't write to. Okay, the editor and then again address, then from which newspaper and magazine the editor. Introduction, opening a statement, give reference to the region concerned for writing if you have. Now second part is problems. Raise the issue by citing some latest news item, survey report, personal experience. Analyze the issue in terms of its cause and consequences. Then you have to suggest, and if you have any idea regarding the solution, then you can write also. Offer suggestions, solution to curb or control the problems or issue. At last, in the third para, complementary clause. Complementary clause is must. Actually, you have to write in 3 para. Body should be in 3 paragraphs. First problem, then if you have any suggestion and solution, and at last complementary clause, and then at last you have to write yours truly
yours sincerely, yours faithfully. Then according to question you have to write the name also. Okay. Now it's very clear in your format here. Sender address, date, receiver address, subject and salutation, then body of the letter. Okay. Suggested value points for some important topic of letter to the editor. You know very well, whenever you write a letter to the editor, then different types of questions is asked, different questions are asked, and that time you have to suggest some value point. You have to keep in mind important point also. So if here is you have to write a letter to the editor and topic is पुअर बस सर्विस. जब आप पुअर बस सर्विस को लिख करके आप एडिटर को राइट करोगे तो क्या क्या मेन चीज आएगी ये आपको याद रखना है. नाउ पुअर बस सर्विस एडवर्सली अफेक्टेड द lives of residents and colony far from the main city. Long wait, few buses frequently frequenting the areas, and time don't even stop. Buses overcrowded, boarding not safe, school children, office goers worst affected, money wasted, and autos, taxis and community. यानी जब आप ये बताना चाहते हो दी एडिटर को कि आपके एरिया में बस की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसमें क्या क्या बातों को याद रखोगे. पॉसिबल solution क्या हो सकता है. whenever you write you are changing the paragraph, that means I have told you already in format at the second paragraph you have to write the suggestion and solution also. Then you have to write improving bus service, increasing number of buses, repeated pillars and requested to be to the transport department corporation no relief. ओके इस तरह की बातों को भी आपको शामिल करना है. जैसे कि फॉर्मेट बनाने के बाद फॉर्मेट आपने जाना, फॉर्मेट जानने के बाद ये आपको आगे बिल्कुल करना है, कंटिन्यूसली करते जाना है. इससे क्या होगा आपका और भी अच्छा होगा. नो कंजेस्टेड मेन रोड्स, हैवी कंजेशन ऑन द मेन रोड, एनरिचमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, illegal parking on the road and inconvenient to road users, especially children and women. आप देखते होंगे कि खास करके जो चिल्ड्रेन एंड वुमेन को किस तरह से प्रॉब्लम होती है. सजेशन यू हैव टू राइट ऑल्सो रिमूव इनकरेजमेंट एंड सेपरेट साइट फॉर द रोड साइड एंड हॉकर्स एंड क्रिएट पार्किंग स्पेस अवे फ्रॉम द मार्केट. यानी मार्केट के बाहर एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए जहाँ पर पार्किंग की सुविधा हो, एंड हॉकर्स के लिए भी रोड साइड में कहीं ना कहीं जगह होना चाहिए. ऐसा नहीं कि रोड साइड में जगह ना हो तो हॉकर्स क्या करते हैं, हॉकर वाले क्या करते हैं, रोड पर आ जाते हैं. डिटेक्टिंग कंडीशन ऑफ द मेन रोड, यानी मैं जो बताते जा रहा हूँ ये बताते जा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे. यानी इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो आप कितने इजी से आप उसे पूरा कर सकते हो. Now, the main road leading to our colony has 3 uncovered manholes causing frequent accidents at night, frequent traffic jams. It can be lethal for all persons, especially small children, great inconvenience to all, cause fall, smell, pollution and mosquito breeding, and lack of the street lights add to the waste and difficulties to the residents of the colony. Inaction by the concerned authorities, suggestions, improvement of roads, better implementation of laws and greater awareness. यानी इस तरह की बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने लेटर को पूरा करोगे. नो मिसयूज ऑफ मीडिया. इफ मिसयूज ऑफ मीडिया आपका टॉपिक है एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, देन व्हाट हैव टू कीप इन योर माइंड. मीडिया मिसयूज्ड फॉर द सेक एंड पब्लिसिटी, प्रमोशन एंड सेल्स एंड इंक्रीजिंग. जो आजकल आप देखते हो कि बार बार आ जाती है टीआरपी को लेकर के, अर्न मोर एंड मोर मनी एंड टू हर्ट द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द विक्टिम्स, आरओसी मर्डर केस लाइक दैट. इस तरह का बातों को लेकर के. कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यूज चैनल एंड प्रिवेंट्स of fake news, colored and biased reporting common today, political affiliation and regionalism. Communism affect common man. Suggestion: media needs to impart correct information. Media should not play with the emotions of common man. Free press needs to be the
responsible press action by the government against misuse of India, better implement of laws. यानी किस तरह से यदि गलत इस्तेमाल मीडिया किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है, देन विच टाइप ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव. सो यू हैव टू राइट द लेटर टू द एडिटर. तो इस सब बातों को ध्यान में रखना है. यानी मेरा कहना यह था यहाँ पर कि यदि मिस यूज ऑफ मीडिया ये टॉपिक आता है तो क्या किस बातें आपको ध्यान में रखना है. Irregularity in collection of house garbage, irregular collection of the garbage bags not picked up. यानी जब आपके घरों से गार्बेज का कचरे का उठाना रेगुलर नहीं हो पाती है एंड यू वांट टू से समथिंग टू द एडिटर, यू वांट टू राइट अ लेटर टू द एडिटर टू फोकस दिस टॉपिक्स. तो आपको ये सब बातें याद रखना है कि जो आपको मेंशन करना है. अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, यदि व्हीकल की जो पार्किंग है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है तो आप क्या करोगे. इस तरह की बातों को नो पार्किंग स्पेस लेफ्ट एंड द रेसिडेंस एंड लोकल ट्रैफिक कंजेशन आल्सो सजेशन यू हैव टू राइट एक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड बेटर इंप्लीमेंट ऑफ द लॉस एंड ग्रेटर अवेयरनेस. यानी आदमी को भी थोड़ा अवेयर करना है. रेकलेस ड्राइविंग बाय द यंगस्टर, आजकल आप देखते आते हो कि बहुत ज्यादा तेजों में जो गाड़ी चलाई जाती है यंगस्टर के द्वारा. तो क्या क्या कारण आपको पॉइंट मन में रखना है और एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन आल्सो insanitary condition of the locality, pits at every steps and the street and roads, mosquito spread on them of the spread malaria, dengue, okay, and that no dustbin, sweepers don't come regularly. इस तरह की प्रॉब्लम उन्हें होते रहता है. Now I am talking about severe water crisis. Reasons of water shortage, क्या क्या reason है. Increased pollution, lack of the awareness, careless use, lack of the international cooperation, and effect of water shortage, global warming and glacier melting. Suggestion, solution, increase social awareness, organize campaign and the raise awareness, teach school children. यानी ये बातें आपको मन में रखना है कि जिस समय आप यदि राइट करते हो और वो टॉपिक आ जाती है तो कौन कौन सी रेलिवेंट टॉपिक आपको मेंशन करनी है. फ्रीक्वेंट डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बार बार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. Irregular supply of electricity causing great problem, residents blackout for several hours, and in these hot months it becomes unbearable to do without electric power. तो किस तरह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती कंटिन्यूसली. न्यूसेंस caused by the लाउड स्पीकर, बहुत जोर से आवाज से लाउड स्पीकर चलाई जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको होती है. ब्लेडिंग साउंड्स ऑफ द लाउड स्पीकर कंटिन्यू डेज एंड डे आउट. लेट नाइट पार्टीज आर द वर्स्ट shunner in the respect people cannot get peaceful sleep and students can hardly pay attention to their lessons. यानी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है. Unauthorized construction on the pavements and park, difficulties while crossing roads and building materials scattered on the roadside. बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल फैला हुआ रहता है. ट्रैफिक जाम्स ऑलवेज अकर्स, और बराबर क्या होती है इससे ट्रैफिक जाम भी हो जाती है. ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग, आप देखते हैं कि गली मोहल्ले में बहुत सारे डॉग्स जो है ना आपको परेशान करते हैं. इंट्रोडक्शन द प्रॉब्लम, आपको किस किस तरह से परेशानी होती है. वाई पीपल बिहेव इन दिस मैनर, इंसेंटिव ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स एज अ मेनेंस and no love in the stray dogs out of the fear and suggestion. You have to write also which type of suggestion you need to write, क्या क्या आपको जरूरी है कि सजेस्ट करने के लिए so that solution मिल सकता है. Nuisance created due to the absence of a street light on the main road, location of the colony, busy street traffic, main road leading to the colony, no street light on the main road of the colony, problems complete darkness, inconvenience, difficulties in driving, problems in residents and chances to mishap and mishapping, unsafe. इस तरह से आपको परेशानी होती है. यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है, यू ऑल हैव टू रीड ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन क्लियर जो भी मैंने अभी तक बताया आपको. क्वेश्चन इज यू आर आंचल अरुण, इट्स वेरी क्लियर. इफ यू आर बॉय देन अरुण एंड गर्ल इज आंचल, living at 4/13 Punjabi Bagh, New Delhi. Your address is 4/13 Punjabi Bagh, New Delhi. Write a letter to the editor of Times of India. That means you have to write a letter to the editor, and newspaper name is publisher's name is the Times of India, about the burden of heavy bags and that children carry to school. आजकल के बच्चे को बहुत भारी भारी बैग को कैरी करना पड़ता है. First you have to know about the
I have told, as I have told you clearly, sender's address for a 113 Punjabi Bagh, Delhi, and date 2 March 2021, जो भी डेट है इस फॉर्मेट में ही राइट करें, डोंट पुट 203 इस तरह से ना करें, इट विल बेटर. एंड रिसीवर एड्रेस, द editor is designation and the time of the India, the time of India and Delhi. Then subject, undue burden on school children. Then salutation, sir. Then first you have to write about a statement of problem through the column of a studied element newspaper. आपने इस तरह से राइट किया. Then next you have to say about the results of problem, यानी प्रॉब्लम किस तरह से हो रही है. Then you have to write it next para. I have told you solution या तो suggestion आपको राइट करना है. And at last you have to close, complimentary close. Yours sincerely, yours faithfully, yours. इस तरह से आप राइट करो. And you should write your name. If you are a girl, then answer. If you are a boy, then Arun, according to question. Okay. If you will ask, sir, there is no any name mentioned in question, then what I have to write? You can write XYZ, ABC. You can write, no problem. But mostly time name is mentioned. Okay. Hope कि आप सबको समझ में आया होगा. यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा.